Hello friends, welcome back to my channel. First of all, let me thank you for all the love and support. It really means a lot. मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है ना कि मैं सोचता हूँ और भी वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, और भी क्रिएटिविटी लाऊँ. I should go to different places. I should do more of bike reviews. So thanks for all the love and support. Keep them coming. And let's do the ride review today. And also check out different places. I hope you like this video. If you like the video, do press the like button and subscribe the channel. 2000 years later. Hey friends, I hope आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे. I am super excited for this breakfast ride from Mumbai to Alibag. I will show you places along the route and also the beach itself. So I will also talk about the first maintenance. Somebody was asking me about the maintenance. So friends, मेरा maintenance हुआ था कुछ 1-1.5 महीना पहले, और it was I spent about 1700 rupees for the maintenance, first maintenance. Basically first maintenance जो होता है friends, वो आपका 750 to 1000 kilometers में होता है, which is 15 to 30 days में. तो मेरा 750 kilometers complete हो गया था. So during the maintenance they actually changed the engine oil. Okay, उन्होंने 2 लीटर का इंजन ऑयल चार्ज किया, विच इज़ अबाउट 1000 रुपीज़ कुछ चार्ज किया था उन्होंने. ऑयल फिल्टर चेंज किया था, 70 रुपीज़ के आसपास था वो. कुछ वॉशर ड्रेन था एंड स्मॉल थिंग्स. चेन लुब्रिकेंट उन्होंने चेंज किया था, लगाया था बेसिकली 250 रुपीज़ का. सो दैट्स इट. सो कुछ टोटल 1700 रुपीज़ खर्चा हुआ था. Friends, I'm just stopping here for a breakfast in Panvel, and then we will continue the trip. I'll just have a small quick grab. So this is Sarovar Hotel in Panvel. I usually stop here. This is a good place. Thanks, the guy is okay for me to park here. So this is the hotel. Very very nice place. अगर आपको confusion होता है ना महाराष्ट्र में क्या खाना है सुबह 7-8 बजे, सबसे अच्छा है इडली वड़ा सांभर. That's the best. Okay friends, so we finished the breakfast, and just after Panvel I saw this a cricket match going on. So I thought I'll just do a small off-roading also and show you. एक क्रिकेट मैच हो रही है यहाँ पे. पूरा बाउंड्रीज पिंक कलर की बाउंड्रीज बांधी है, एज इफ ऐसे लग रहा है पिंक टेस्ट है. बट वेरी वेरी नाइस. दे हैव अ स्टेज देयर एंड आई थिंक मैच स्टार्ट नहीं हुआ है. कैसा लगा मेरा मजाक? ओके, सो लेट्स हेड बैक टू द मुंबई गोवा हाईवे. मैच इतना जल्दी नहीं होगा स्टार्ट. इवन क्राउड भी अभी स्टार्ट हुआ है आना, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग है. बट इट वॉज अ स्मॉल गुड ऑफ रोडिंग का मज़ा आता है एक्चुअली. आई डू सम ऑफ रोडिंग सम टाइम इन फ्यूचर. ओके, सो वी आर बैक ऑन मुंबई गोवा हाईवे. दिस इज़ आवर ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे. कुछ मूवीज़ भी बनी थी पुरानी. अमिताभ बच्चन की मूवी बनी थी बॉम्बे टू गोवा, यही हाईवे पे बनी थी. अभी तो वन वे हो गया है. पहले हम जब छोटे थे हम जाते थे तो ये जो रोड आप देख रहे हैं इतना ही रोड होता था. दोनों साइड से व्हीकल्स आती थी. अभी तो इन्होंने चौड़ा कर दिया है, बड़ा कर दिया है, विच इज़ गुड. बट या दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हाईवे. आई जस्ट लव दिस बॉम्बे गोवा हाईवे. इट्स वेरी ग्रीन, स्पेशली आफ्टर पनवेल के बाद. तो पेन के बाद तो एकदम ग्रीन हो जाता है ये. It passes all along the coastline of Maharashtra, which is beautiful. You can just 50, 60, 40 kilometers में, even 30 kilometers में you can actually access different beaches from this Bombay Goa highway. It's really beautiful. So we just took a detour, friends, for Alibag. Now we are heading towards Arabian Sea. हमने छोटा सा डिटोर लिया फॉर अलीबाग, एंड द रोड्स विल नाउ गेट नैरोअर. ओके, सो या कमिंग बैक टू दैट मेंटेनेंस फ्रेंड्स. सो 1700 रुपीज़ का कुछ मेरा मेंटेनेंस हुआ था. आई टोल्ड यू वॉट एवर आई हैव
whatever they did, it was they changed the engine oil. उन्होंने ऑयल फिल्टर चेंज किया, कुछ वॉशर ड्रेन लगाया था, चेन लुब्रिकेंट का कुछ 250 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया था, और कुछ कंज्यूमेबल्स का 100 रुपीज़ चार्ज किया था. सो इट वाज प्रीटी decent, 1700-1800 rupees में. And then you have a second service which will happen from 5500 kilometers to 6000 के बीच में, or 165 to 180 days, whichever is earlier. That's when you will have to get your second service done. So अभी तो मेरा time है, and third service is after 11,500 kilometers or 1 year, whichever is earlier. So I still have some time before the second service. अगर आपको सर्विस के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे बताइएगा, and I'll be happy to answer them. एक बेनिफिट जो मैंने देखा, not in the performance but in the mileage. मेरा माइलेज थोड़ा 1 या 2 किलोमीटर से बढ़ गया है after first service, but performance I didn't find any much of a difference on my Honda Hness CB350. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ टिपिकल कोस्टल रूट. आप देख रहे हैं ये जैसे हम गोवा में जाते हैं वैसे ही सब कोस्टल टाउन्स के रूट्स छोटे होते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आता है. इट्स ऑल ग्रीन बोथ द साइड्स. आई एम वेरी थर्स्टी. लेट मी जस्ट ग्रैब अ बॉटल ऑफ वाटर. दिस इज़ कोस्टल टाउन. एक पानी का बॉटल है. थैंक यू. So we finally reached Alibag city, friends. This is Alibag city after driving for 2 hours from Mumbai, about 2 hours 15 minutes from Mumbai, with the halt of 10 minutes 15 minutes. So this is Alibag city. काफ़ी डेवलप हो चुका है. अभी तो हम पहले छोटे आते थे तब तो इतना डेवलप नहीं था, बट अभी तो बहुत डेवलप हो गया. यू हैव ऑल द ब्रांड्स नाउ हियर इन अलीबाग. ऑलमोस्ट ऑल सेलिब्रिटीज़, जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ के बंगलोज़ यहाँ पे हैं. सो इट्स अ प्रीटी हैपनिंग प्लेस एक्चुअली. A typical coastal town. Now I'm heading towards Alibag beach. Basically it's very simple. You just have to keep taking left. We know, once you're riding, which way is the Arabian Sea or samudra kinara kis taraf hoga. So it's basically all left now. So now shops are pretty I don't know why shops are closed, but anyway, maybe it's early morning. Most of these coastal towns are very laid back, They're very laid back. People sleep in the afternoon, wake up a little late. So this is a typical now you can see the horizon. Whenever you try and reach towards the beach, you'll always first see the horizon. दूर से ही दिखता है. I hope you are able to see. That's the beach in front of you, Alibag beach. I'm very excited. Honestly, I'm 2 hours 30 minutes के बाद भी I'm feeling very very fresh, which is a good thing. So this is the beach, friends. And बाइक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया ना, इतना स्मूथली लेके आई है मेरे को वो मुंबई से अलीबाग. आई एम सो हैप्पी, रियली रियली हैप्पी. इट गिव्स यू सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस. ऐसा लगता है ये बाइक को कुछ प्रॉब्लम होने ही नहीं वाला है. So let me park my bike. We'll take that. We'll take this small bridge or raised platform जो बनाया है इन्होंने. So this is your Alibag beach. It's a black sand beach. The sand is black, but it's very clean. It's very very clean. It's not a white sand. Usually you've seen that Varka beach in Goa is all white, right? This is exactly opposite, but equally clean. You have these water sports activities here. There is a fort, Shivaji fort there. You can actually walk barefoot and go there. It's really fun, walking on the beach and going towards that fort. I always do that.
यहाँ पे इन्होंने बैठने का भी मस्त बनाया, यू कैन जस्ट सिट हियर फॉर एन आवर. Okay friends, so I'll take a leave. If you liked what you saw, just hit the like button and subscribe the channel. Take care and bye.